Assalamualaikum. How are you all students? Perfect, fine. Okay. Uh, Last we have discussed about the marks distribution and the definition of statistics. What is the meaning of statistics in our daily life, and what is the procedure in the definition of statistics? Statistics is a procedure, no? Okay. Statistics क्या है? एक procedure है. In this type of procedure, we have contained 5 steps. We are containing the 5 steps. Uh, you can see the definition. The statistics is the science which deal with the data. Deal with the data. It means we are talking about all of the things is on databases. Okay. First to collect the data, and then will be prepare, and after that the presentation of data, and then analysis, and then interpretation of the data. Okay, so we will have to discuss, we have already discussed about these things कि कोई भी चीज जो है वो इन 5 स्टेप्स के बगैर जो वो कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है ना. So the collection is very important. Preparation is very important because without preparation we can't be presentation ourselves and so many things in there. Okay, so and after that of the presentation, the analysis, the person who will you give to the present by yourself, and आपने जिसको भी present किया हो, so वो क्या करता है, वो he will be analysis and interpretation of the data. So it means the collection, preparation, presentation, analysis, and interpretation of the data. You can be any steps. You can be remove it. Okay, so we move to the every steps, and we have discussed about the definition in our daily life. So in our daily life, we have to prepare. We have to collect us from by the clothes and some things, and now we will be preparation for the party, and we will present on the party. Your friend will be analyzed to you, and then the interpretation is this, that you are looking good. So this is the very easiest example of daily life, and also be a part of the daily life example in our mothers our mothers work it on kitchen. Every steps also be involved in that condition, in the condition to making the biryani, and you have to collect the mother says to you first to collect the ingredients by the marketplace, and then after that you will provide it to your mother, then for preparation and after that your mother agrees on in in her home. It will be, I think so, he in he I think she's very obedient, and the mother said कि बेटा खाना लगाइए. तो तमाम लोग जो हैं वो तमाम किचन में जाते हैं और जाके खाने को सर्व कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं. एंड आफ्टर दैट हाउ टू एनालाइज. जैसे ही आप उस बिरयानी का एक निवाला मुंह में रखते हैं, तो यू कैन फील what is the quality of that type of biryani. So you by your heart, from mother, mom, you are great because आपने बिरयानी आज बहुत ज़बरदस्त बनाई है. So this is the interpretation of the data. Okay, so we have to already discuss in the last class. We can say completely discuss the definition of statistics. Now, moving to
Moving to the next slide. Moving to the next slide. First, we discuss the terms of the statistics. Uh, there are so many terms involved in the statistics. First of all, I want to discuss about the term population in this matrices and in this type of statistics. So you have to see that on your screen. The term population refers to any well-defined group or object or thing whose characteristics are to be studied. So, what is definition? वो how population की जो definition है वो क्या explain कर रही है, क्या चीज़ explain कर रही है? What is the meaning of population? The entire data is what you have to collect about the data. Your entire data is represent the population. Your entire data is the population. I think so. We have to discuss about our family, our family background, your chacha, your mamu, your auntie, your khalu. So many relatives on your side. Uh, these are the population of your family background. Uh, everybody has some chachu, some mamu, some other khalu. So these are the population of your family. So this is the entire data. So this is the entire data of the population. But but first of all, you can the example. You can see the example of these things. Population of employees of an organization. Population of the employees on the organization. In the organization, all the departments, all the population of the departments, the entire population of the organization is population of the organization. Next point is this population of books in a library. There are so many types of books on library on their shelves in our college, in your different types of colleges. This is very important thing. Uh, we are talking about the population. No? So it's mean every subject, all of the subject involved in it. Okay, because we are talking about the entire data of the library. So it means that so it means that uh, so it means that the population in the library, all of the subject is collected in uh, form of population. Okay, the next thing is the population of fishes in lake. All of the population, there are different types of fishes. There are different types of fishes in lake, but we are talking about the entire data of the population of fishes in the lake that we have to see. We have to call about the population of fishes. So this is the all of the things. This is the explanation, or this is the explanation of the population. Okay, so I think so. It could be said that जब हम बात करते हैं इंटायर डेटा की, तो इंटायर डेटा के अंदर हम ये बात नोट कर रहे होते हैं कि हम जिसकी बात हो रही होती है वो तमाम डेटा की बात हो रही है, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो फिशेस हो, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली बैकग्राउंड हो, आपके खाला चाचू मामू जितनी भी चीज़ें तो हम सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे. दीज डेटा वो तमाम पॉपुलेशन आपके खानदान की जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने खानदान में आपके खानदान में कितने लोग हैं, so this is called the population of the data of yourself. This is the population of your uh, family. So we can also say in there the example of population. Clear? Is there any query about population? No.
Okay, great. I think so. It is very great. The chat box is very helpful for us because you can, if you have any query, you can use by chat box, and then we will discuss that your queries about in here. Okay. So now, what is a sample? What is a sample? A sample is a part of the population that is collected for analysis. The term sample in the sample is that term. इसको हम बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं कि सैंपल है, ये चीज का सैंपल है, ये चीज का सैंपल है. So I'm not talking about that type of things. This is the sample of the something. What is sample? Sample is a part of the population. Sample is a part of the population which is involved in the market, either which is involved in the market or not. वो चीज मार्केट में आ चुकी हो तब भी, और मार्केट से पहले मार्केट में अगर नहीं आई वो चीज तब भी. अच्छा, मार्केट में जो चीज नहीं आई तो उसके लिए क्या होगा, अभी हम सब से डिस्कस करेंगे. सो you can just observe that what is population and what is the sample. Sample means it is a part of population. Sample means it is a part of population. Uh, Now see the example. Average salary of the employee of the organization. It is not talking about. It is not talking about the individual salary of the of the employment of an organization. This is not saying that. It is the first part of this example is the average salary. The term average salary used. It is not saying that the individual salary of the employees of an organization. The second part, the proportion of the books on the statistics in a library. Um, the whole books in a library is called population. And if we are talking about with the portion of statistics, the books of statistics, so someone that in charge of the library is said that, okay, you go there, and this is the type of there are so many books in here of the statistics. So this is the part of population. This is the part of population. वो पूरी लाइब्रेरी जितनी भी थी उसमें से जो स्टैटिस्टिक्स की थी, जो बुक्स थी, वो कहाँ पे रखी हुई हैं, वो एक अलग जगह पे रखी हुई हैं. तो वो क्या होगी, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ statistics. Clear? The term population and the term sample. Examples of sample, examples of population. Clear? Okay. I have a lot of examples in there, but यहाँ पे मैं एक बात आपसे एक शेयर करूँगा कि सैंपल को समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि सैंपल है क्या. ठीक है ना. हम जब मार्केट में जाते हैं, when we going market, in nowadays there are so many supermarkets in here, in our society. Just like so many brands, so many supermarkets in here. You can see that all the packets shows that the type of the rice, on there. You can see the price of 600, 800, 1500. It varies on the quality of the rice. The price is depend on the quality of the rice. So once upon a time, my mother said that कि बेटा 2-5 किलो जो है वो आप बिरयानी का अच्छा चावल देख के लेके आ जाएं. When I'm talking about before 15 years, there are no supermarkets, no
and the conditions in our society. The society is अब जाके जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो है वो एडवांस हो गई हैं, लेकिन पहले नहीं थी इस तरह से। पहले भी बड़ी दुकानें हुआ करती थी, तो उस वक्त हम मेरी मदर ने मुझसे कहा कि 5 किलो जाके चावल लेके आ जाओ बिरयानी का, अच्छा वाला देख के लेके आना, ठीक है ना। सो आफ्टर दैट I visit a shop and said that the shopkeeper कि आप जो है वो एक बिरयानी का अच्छा वाला चावल दिखाएं। बिरयानी का अच्छा वाला चावल कौन सा है? तो he said that the price of that is talking about I think so 15 years back. The price of the good rice is 60 to 70 rupees, maybe 80. बहुत हुआ तो जाके 90, बहुत हुआ तो 90। when the average price of the price डेली लाइफ की जो हमारे पास प्राइस हुआ करते थे, तो वो हमारे पास बामुश्किल वो आपके 40-50 रुपीज के अंदर, 60 रुपीज के अंदर राइस आ जाया करते थे। बट नाउ अब तो बहुत महंगी हुई चीजें। तो जस्ट द फोकस ऑफ द एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूँ ना उसको सुनिएगा आप, तो आपको क्लियर होगा पॉपुलेशन की डेफिनेशन और सैंपल की डेफिनेशन। कि पॉपुलेशन में जब हमने कहा, उसको शॉपकीपर को बोला कि 5 किलो बिरयानी का अच्छा वाला चावल दिखा दो, तो वो चावल दिखाता कैसे था? आप बताएं, आप सोचें वो कैसे दिखाएगा, वो कैसे शो करेगा उस चीज को कि ये जो है ये बिरयानी जो है वो अच्छी वाली है, ये मैं क्वालिटी दिखाऊंगा इसको, शॉपकीपर जो है वो मुझे दिखाए, तो किस तरह से इसको ऑब्जर्व करेगा, किस तरह दिखाएगा? यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। यही सारी बातें होती हैं कि अगर आप मेरा लेक्चर जो सुन रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो आपको आप इंटरेक्शन रहेंगे तो बहुत मजा आएगा लेक्चर करने में, वरना फिर थ्योरी पढ़ना तो बहुत बोरिंग काम है। मैंने मैंने भी याद जब करना शुरू किया था चीजें अपने जमाने में, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि काश मुझे ऐसा टीचर मिल जाता, मुझे जो थ्योरी में जो प्रॉब्लम थी वो जो है वो अच्छी होती, तो शायद मे बी माई जो एबिलिटी थी लर्निंग की वो और अच्छी हो जाती। So it is very important to this that our communication on chat box is available for you and me, both of us. वो जब मैंने उसको कहा कि 200 रुपये अलावा, उस वक्त मैंने कहा उसको कि बिरयानी अगर मैं अभी भी कहूँ, अभी भी किसी शॉपर में एक ऐसी दुकान पे चले जाऊँ कि जहाँ पे वो सुपर मार्केट नहीं है, और मैं उसके पास जाके बोलूँ कि 5 किलो चावल जो दिखाओ कैसा है, तो वो कैसे दिखाएगा? वो पूरा बोरा उठा के लेके नहीं आएगा उसका, वो उस बिरयानी का पूरा बोरा उठा के लेके नहीं आएगा। बोरा जो उसकी बोरी होती है ना चावल की, कोई जो कट्टा होता है उसको कट्टा बोलते हैं। तो दैट इज द दिस दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ दैट राइस, वो जो है क्या पॉपुलेशन राइस की। बट अगर हम ये बात करें कि राइस की वो पॉपुलेशन है, तो वो क्या करता था, वो उसमें थोड़ा सा चावल निकालेगा और लाके सामने रख देगा, आपके आपके सामने थोड़ा सा चावल रखेगा, बोलेगा दिस इज द क्वालिटी ऑफ योर प्राइस, ऑफ योर डिमांड, कि अब अच्छा वाला चावल, दिस ये जो है चावल जो है वो अच्छा वाला चावल है। तो मैंने क्या देखा, मैंने सैंपल देखा, मैंने क्या देखा, सैंपल देखा, जहां से वो लेके आया था, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिस सैंपल, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिस सैंपल। वो जो था बैग पर जो बोरी से उठा के लेके आया था, बोरी जो थी वो पॉपुलेशन थी, और जो बोरी से निकाल के चावल लेके आया, दिस इज द सैंपल ऑफ द डेटा। तो जो भी मैं, क्या मैंने उतना ही चावल परचेस करूंगा जितना दिखाया है उसने? नहीं, जितना दिखाया है सिर्फ उतना ही मैं उसको परचेज नहीं करूंगा। मैंने मेरी डिमांड क्या थी, मुझे 5 kg चाहिए थी, आई नीड 5 kg ऑफ राइस। सो मैंने जो है कहा कि जो अगले 5 किलो चावल लूंगा मैं, वो ऐसे ही होंगे जिस तरह मुझे उसने दिखाए।
So we have to observe that our calculation depend on sample. Our calculation is depend on sample. We are not calculated by using the population in there. मैंने सैंपल को देख के डिसाइड किया कि मुझे परचेज करना चाहिए या परचेज नहीं करना चाहिए, तो मैं सैंपल को देख के काम किया. दिस इज द very important condition for the statistics is statistics based on by using the working on the sample. सैंपल पे काम करते हैं हम. स्टैटिस्टिक्स, एक जो स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट होता है वो एक स्टैटिशियन बनता है. तो स्टैटिस्टिक्स इज द पार्ट ऑफ द साइंस because in statistics, after intermediate you will be able to be BSc and then MSc in statistics, then after the MS in statistics, that is the part of a science. So it will be very important for you that discuss about uh, the population, the term population, sample, and that whatever and what. This is the today is the last. I think this is the last slide of today, and you can see that this is the population. You can see that my laser is showing you. This is the population. This is the population. If we randomly select it, there are so many people in here in the population. We have selected for there, here, from here to there. This is the sample, and statistics work on it, and after that जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है ना. तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये पॉपुलेशन है, जो भी काम करना है हमने क्या किया, हमने सैंपल कंडक्ट किया, और एक स्टैटिशियन जो है वो सैंपल पे काम करता है, एंड देन उसके बाद क्या करता है, प्रेडिक्शन करता है कि इसकी जो कैलकुलेशन है उसका जो आंसर आएगा वो इस पूरी पॉपुलेशन के लिए होगा. ओके, क्लियर? इज देयर एनी कंफ्यूजन हियर? नो? परफेक्ट. The term population and the term sample, what is the difference between? You can you will search on Google and you will be sick that on type of the difference between the population and the sample. There are a lot of examples in here in there on Google screen, and मैंने आपको notes जो हैं वो आपको share कर दिए हैं अब आपके उसमें folder में. You can must be print out on that note. When we talking about any topic, we have to discuss about the notes, and you have our notes in your head, in front of you, and it will be very clear for us. Okay. Today's topics is that now completed, and till then the next topic अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज प्रेयर फॉर अस, फॉर मी in your prayers. Remember me in your prayers. Okay, thank you so much, and Allah Hafiz.